सो देवी सज्जनों, मेरा नाम ट्रैशी भास्कर, आप सभी का स्वागतम गर्मा गर्म तरीके से एक और ब्रांड न्यू फाइनल फैंटेसी 16 16 के एपिसोड पे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। स्केल फिर किन दृश्य का बोरे। How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there.
You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. मेडिसिन गर्ल यहाँ पर काफी अहम रोल निभाते हुए यार, डेफिनेटली यार। मैं देख रहा था उस टाइम जब उसकी एंट्री हुई थी यहाँ पर सेकंड या थर्ड टाइम, किस तरह गार्ड सारे मतलब भगा दे रहे थे यार बेचारे को, एंड वही सबसे बड़े दिल वाली निकली। I can That's so nice. stop you, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Tyre. Tyre. Leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Okay. Speak with Vivian Ninetails. Ninetails. Okay, बात कर लेते हैं। वाह, हंटिंग बोर्ड तो अपडेट हो गया यहाँ पर, तो और क्रीचर्स यहाँ पर आ गए, जो कि डेफिनेटली हम उनसे लड़ाइयाँ कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं अपनी वेपन बदलना चाहूँगा यहाँ पर। तो हमारे पास है रैग्नारोक, जो कि काफी दिखने में शानदार है, नॉट गonna lie। Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? ओके विवियन मैम, डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक धमकी थी यार, नहीं कर रहा मैं इंटरप्ट। सुनेंगे सारी चीजें इकट्ठे बैठ के, बताओ। Barnabas Tham, the one they call the last king. बारनबस, Understand him? कितना एंग्री बंदा है यार। The kingdom of इसका डिफॉल्ट मुंह ही एंग्री वाला है। Barnabas was only क्या कर ले रही थी वो? arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea,
tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canva's streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped, and Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. A new quest is available nearby. That's so nice. सच बताऊं तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मरी में, तो मैं कहना चाहूँगा, मतलब मैं इसको लेके रखना चाहूँगा इस क्वेस्ट को, ताकि हम बाद में फिनिश कर पाएं अगर हमें दरकार पड़ी तो. ओके. पता नहीं, मुझे अंदाजा नहीं. फीनिक्स हील थायसेल्फ अपने आप. तो मैं स्किप कर रहा हूँ यार, बिकॉज डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं इसके साइड मिशन. काफ़ी हद तक इसके साइड मिशन जो है ना, मैं जैसे कि मैंने बताया था, बोरिंग है. आई मीन डेफिनेटली इसमें थोड़ी जान की दरकार है. मीनिंगफुल होने के बावजूद यहाँ पर चीज़ें कुछ, आई मीन एक अच्छी कट सीन की दरकार थी. आई मीन लाइक साइबरपंक जैसा कुछ लिविंग, लाइक ये लोग काफ़ी डेड लगते हैं अगर मैं बात करूँ. जो NPCs हैं, जब आप साइड मिशन लेने के लिए चाहते हो बात करने, कुछ NPC के अलग किस्से हैं, बट कुछ लोग तो बहुत डेड लगते हैं. सो वही बात है. तो यहाँ पर और तो नहीं है ना, यहाँ पर जो साइड क्वेस्ट हमने सारे कर दिए हैं. ओह, एक और किंगडम में यहाँ पर भी आए हैं. 3 रीड्स में आए हैं. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो कि है, अच्छा फीनिक्स का ही एक्चुअली, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तो कैरी ऑन करते हैं मिशन के साथ. विजिट द शेल्फ्स, तो हम शायद इनसे मिलेंगे. क्या बोलते हैं इनको, हार्पोक्रेट्स या हमारे यहाँ पर गुरु कह सकते हैं इनको, जेन्युइन गुरु, क्योंकि ये फ्री में नॉलेज बांटते हैं. I have no reason to assume Clive, you must listen to this. Roseman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus?
I would think not. Few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins. And though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. If it please your grace, might I one day... Mid said I could ride the Enterprise. Borrow the chronicles for a while. जरूर बहन जरूर. अभी निकलते हैं. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. Speak with Otto, okay, तो हमें और बात करनी है. इस गेम में बात बहुत है. I mean, ये चाहते तो इसको पूरी तरह कटसीन के साथ रैप कर सकते थे, बट नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा. ये यहाँ पर है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके बाद एक और कटसीन है, मतलब सॉरी बातचीत है, फिर जाना है, फिर वॉक करना है, फिर ये कुछ चीज़ें यार, ये काश ये चीज़ों पे इन्होंने काम करी होती. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. तो यहाँ पर एक और रीजन खुल गया है जहाँ पर हमें जाना है. एंड साइड क्वेस्ट तो यहाँ पर हैं डेफिनेटली, बट अभी अगर मैं बात करूँ तो द शैडो कोस्ट, यहाँ पर हम जा सकते हैं.
बट दिक्कत ये कि यहाँ पर मैं मिस ना कर दूँ इन साइड क्वेस्ट को, तो कोई बात नहीं, कैरी ऑन करते हैं, लेट्स गो। The Shadow Coast. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her Eikon, didn't you? Yes, I did. She understood. Whoa! Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I've found us a trail. बहुत कुछ हो गया इतनी देर में, पिटाइयाँ होगी पिटाइयाँ। Only that Joshua didn't. I don't get it. The Kingdom of Valisthea. Let's go, baby. गेम बजा डालते हैं। तो फुटफॉल्स इन ऐश इस चैप्टर का नाम है, जो कि हमने करनी है। शैडो कॉस्ट, यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं यहाँ पर। सो नाइस। शिवा चैनल्ड, एक और कमाल की चीज, बट I can't save now. What the flip mean? Territory now. Don't you? हम टेलीपोर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, दूसरे जगह पे जा सकते हैं अगर हम चाहें तो। I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Remember what I said about warm welcomes, Gav? Come on. Faster! Oh, this place is as dead as Grieger's ghost. I knew I smelled something. काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, बट किसी से भी मैं लड़ाई नहीं करने वाला। स्किप करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं सामने की तरफ। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर सब कुछ बंद है।
एंड ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं इनको मैं ख़त्म ना करूँ। गलत है साहब, सीधे शब्दों में गलत है साहब है भाई। God damn. बड़े आए थे पकौड़ा पंती करने। चलो सही है, हमने गेम बजा दिया। That's what matters. Let's go. Carry on करते हैं। It's Canberra all over again. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clive. Obtain stone of vote near Rosaria Aqueduct. Okay. ये तो हमने करनी है। Aye, aye. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slathering monsters. Clive, you must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own? Of course. Mostly. Lady Vivian's map is so old it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Valisthea. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Fly, Ambrosia! Ugh, this place reeks like a mobile's arsehole. Though I'm guessing it's not the smell that'll kill us. No holding back. उसको जंप नहीं कर सकता था उस लॉक को। व्हाट द फ्लिप मैन। कितना आसान तो था। कॉमेडी कर दिया इन लोगों ने और कुछ नहीं। ये कमाल का रिलायबल ब्रिज जो कि नहीं टूटने वाला। ये RE4 रीमेक का ब्रिज है या व्हाटएवर RE4 का। Don't look
down, Torgal. Bahamut's breath. That must be Aistla. What do you think, Clive? Then we're too late. Infected soldiers. सौंदर्य यार आप और आप चे इनका गेम बजाना है boys. Let's go. I wouldn't say nothing. काफी सारे हैं. Like this? A question for later, Gap. कितने कुत्ते लेके आया था यहाँ. कॉमेडी कर रहे हैं लोग. ओह माय गॉड. अब दृष्टिकोण अब मजा आएगा ना भाई. हमारे सामने काफी सही प्लेयर है. बंदे लोगों के यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा यार जनसंख्या कम नहीं रही है. बड़े बफ वाले मॉन्स्टर आ रहे हैं. कोई बात नहीं, इनको मारने में जो मजा है ना, बिकॉज इस गेम का कॉम्बैट बड़ा सौंदर्य है. सेटिस्फाइंग एट इट्स पीक. एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा बहुत कमाल का है, बहुत ज्यादा कमाल का है भाई. कड़का दिया बंदे ने. तारीफ कर रहा था यार मैं.
खत्म। रैप अप बोलते इसी के साथ स्टाइलिश अंदाज में। दरकार थी इनकी। यार मेरे पास 9000 एक्सपीरियंस पॉइंट है, मैंने इस्तेमाल क्यों नहीं करी? मुझे करनी पड़ेगी। ओह, एक और क्वालिटी कट सीन सारे बचा के रखे। सो नाइस। काफी यहाँ पर जनसंख्या थी यार। मैं आबादी जो थी ना यहाँ पर, जिस पैमाने पे लोग आ रहे थे, एनिमीज आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा थे। बट आई गेस वो इनफ नहीं है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। ओडिन हमारे ऊपर ही खड़ा है। ओह माय गॉड, दृष्टिकोण का सैवेज विलन है। देख रहा था वो इतनी देर से, क्या लड़ाई कर रहे हैं लोग। सबसे डेयरिंग बॉस होगा ये। Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. उसका मास्टर अल्टीमा की बात कर रहा है। यार ये फिर तलवार चला के। Why, with this? कमाल का लग रहा है सब कुछ, बहुत शानदार, खूबसूरत मैन। ये क्या स्पॉन करा रहा है? वो ये क्या है? इतनी बड़ी ये तलवार नहीं, यहाँ पर काफी सारे टावर टाइप स्टफ है। मुझे अंदाजा नहीं है क्या है ये। अच्छा ये बैरियर है, आई गेस। आई थिंक सो ये बैरियर है। What did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! कमाल की ताकत है। आसमान में हॉर्स राइडिंग कर रहा है यार वो, समझ सकते हो। Savage as late. Would you mind telling me what the fuck just happened? मुझे भी जानना है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ पता चला हमें। वेसल आकाश, मे बी स्टोन हायर है ना, ये अलग चीज है। ओडीन यहाँ पर सारे मरने वाले। I knew it. एग्जाम्पल बेचारे एनिमल के साथ बर्ड से पता चलता वहां पे। We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. Maybe there's something here we can use. इस विलेज में कुछ हो हमारे काम का। गेम यही बता रहा है। सर्च द अबैंडन्ड विलेजम दृष्टिकोणम। So did I.
एक्सपेक्टिंग मदर, उसका नाम है। Miss. ओ ये अच्छा ये मदर बनने वाली है। ओके We're not turned, all right? Who? My thanks, kind travelers. Edda, forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it was the Arcade. One by one, people went mad, minds taken by the aether, till only I remained. By then, I was too far along to run. And then the nights came, and I didn't know what to do. And this, Arcade is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the aether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. लगता नहीं हमें एडा को एक सेफ प्लेस पे लेके जाना चाहिए। I mean हमारे हाइड अवे में। That's where we'll find the king. बट क्या हमारे पास वक्त है उतना? क्या ये लेके जाने वाले? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। I don't know man. Like अभी तो वो इसी में पूरी तरह अपना ध्यान लगा चुके हैं। Hey, Phoenix. It's the same as Phoenix Gate. Which means at the end of these stairs should be... The mural is complete.
Ultima and his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. But where is the Phoenix? By the Founder. So that's what you want, isn't it, Ultima? So that's how it's gonna be then? I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. चलो सही है, एटलीस्ट गैव एडा के साथ है। कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी हमें कहाँ जाना है? मेक फॉर द रेवरी। चलते हैं फिर। ये रेवरी कहाँ है वैसे? हम इसको कहाँ से रीच कर सकते हैं क्या? If Barnabas is controlling the Akashic, then wherever he goes, they'll follow. And so will I. वाह, क्या बात है। एक स्टैंड भी था वहां पर रखने के लिए। क्या बात है। मैनेजमेंट बोलते स्वीट वाला। ओके चलते हैं यहाँ पर। हम रेवरी पहुंचने अरे यार पैर किधर किधर फंस जाता है इसका। फुटफॉल्स इन ऐश। बड़ी डेड जगह है यहाँ पर, जैसे कि एथर का यहाँ पर फ्लड हुआ है। प्राइमोजेनेसिस जो भी हम कहें। हालत बहुत खस्ता है यहाँ पर सारी चीज़ों की। बेचारे मॉन्स्टर का नाम ही है, क्या था नाम? मैं भूल गया। मैं कुछ था हल्का सा, मैंने कहीं और ध्यान दिया, पूरी तरह भूल गया मैं। वोड़े वो यहाँ पर एक और आ चुका है फास्ट ट्रैवल करने की जगह। यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बताई। तो किंगडम ऑफ बलूद, रेवरी, बारनाबस, सारी चीजें यहाँ पर रेडी है। This is it, boy.
यहाँ पर लिखा है एंटर द टावर, व्हाई नॉट। चलते हैं, रेफरी यहाँ पर है और तो चलते हैं मैन, लेट्स गो। इस टावर पे क्या है और क्या यहाँ पर हमारी जंग, लड़ाई मिस्टर ओडिन से होने वाली है क्या? मिस्टर बारनाबास। I've come for you, Barnabas. Stay close, Torgal. रिएक्टिव है काफी हद तक, वो हस्की की तरह है लॉल, बोलने की भी कुछ कोशिश करता है। तो इस चेंबर में मैं जा रहा हूँ, उसका मतलब बॉस बैटल से ज़्यादा मैं दूर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे टाइप के चेंबर जब भी आते हैं इस गेम में हम बहुत करीब होते हैं इन बॉस बैटल्स के। आई मीन ओडीन का हम सामना कैसे करेंगे ये तो नहीं पता। यहाँ पर हमारे साथ फीनिक्स नहीं है। द लास्ट किंग, चैप्टर का नाम देख रहे हो, खतरनाक सा है। द लास्ट किंग, इवन दो यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर लड़ाइयाँ होगी डेफिनेटली, ये लोग स्पॉन करेंगे, आई नो भाई। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लग रहा है। यहाँ पर भी पिटाइयाँ होने वाली है। पिटाइयों के लिए तैयार। और कौन है? ओह, लेफ्ट है। ये लेफ्ट है मैन, यहाँ पर पिटाइयाँ करनी है। लेट्स गो। ये बहुत हद तक वैसा है जब हम फर्स्ट टाइम किससे लड़े थे। हम फर्स्ट टाइम जब हमने पहला बॉस कौन था यहाँ पर? गरुड़ा के बाद एक और बॉस था, मैं भूल गया उसके बारे में। अल्टीमा से जब हम लड़े थे एक्चुअली, तब उसमें काफी सारे यहाँ पर ऐसे चेंबर हुआ करते थे। ये क्या हुआ यार? वन शॉट कर दिया चौधरी ने। मुझे पता है वो फटने वाला था, बट यार ये एबिलिटी मैंने जो इस्तेमाल करी ना, पूरा मिस डायरेक्शन हो गया मेरा यहाँ पर। कोई नहीं। चलो भैया, खेल खत्म। और कितने यहाँ पर चेंबर्स हैं? ये देखो, इंतजार कर रही पत्थर की मूर्ति।
फटने वाला है यार वो, बहुत ही गलत तरीके से। क्या बात है, हमने जादू कर दिया मैन, जादू। एक और राउंड, ये तो आगे जा ही जा रहा है। आ जाओ, कौन स्पॉन करने वाला है? अच्छा ये लेफ्ट है, इसके बाद एक और राउंड आएगा। भाई पूरी की पूरी जनता वेट कर रही है मेरे यहाँ पर। स्पाइडर कीड़े, लॉल, फॉलन बग इनको हम कह सकते हैं, फॉलन बग। इधर आ तू, इनका रेंज नहीं आ रहा ना, इधर आ। अबे रेंज सही में नहीं आ रहा। कोई नहीं, अकेला बग। क्या बात है छोरे, किससे मुलाकात हो रही है हमारे यहाँ। लेवल 36 का चौधरी चांडीमाल। वाह, यहाँ पर चेस्ट रखी है, तो इस चेस्ट में फ्लेवर ऑफ आइस, सॉरी फ्लेवर नहीं, फेवर ऑफ आइस हमें मिल चुकी है। अभी तक हल्की सी भी करीब नहीं पहुंचे हम यार। कम ऑन, ये क्या, ये वो पल है? अच्छा नहीं, वो लेफ्ट है। If I were Barnabas, where would I be? The top. So I could look down on the world. Okay, तो हम टॉप पे जाने वाले हैं। वाह वाह, 2 लिफ्ट भर के गुंडे लेके आ रहे हैं, क्या बात है। आ जाओ गुंडों के साथ ही लड़ना है अब तो। अबे यार मिस हो गया मैन।
अबे यार ये लोग भी आए चौधरी बंदी करने, मुझे पसंद नहीं है। को साथ में और क्या चाहिए, सब साथ में है ना। ओह शूट, मेन काफी गलत है। ये जो फटता है ना बहुत ज्यादा डैमेज लेता है। ओके हमारा काम हो गया। 2 भर्ती लेफ्ट, ठीक है, पेलने आई थी हमें। बाप रे बाप, एक और लेफ्ट। अभी तक हम ऊपर नहीं पहुंचे। और कितनी दूर जाना है हमें उस लड़ाई को एक्सेस करने के लिए। ये टोटली यहाँ पर सस्पेंस बिल्ड कर रहा है मैन, पेशेंस को टोटली टेस्ट करता हुआ। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कभी ना कभी तो आने वाला है। Yeah, let's go. कट सीन अच्छा नहीं, कट सीन नहीं है वो, बस ऐसी क्रॉस फेड था मैन। कट टू ब्लैक। ओ ये चौधरी चांडीमाल, अरे बाप रे बाप, कौन है ये भाई? मेरी तो रूह कांप रही है इसको देख के, घंटा कांप रही है। लेट्स गो बेबी, खत्म करते हैं इसका गेम। व्हाटएवर ही इज। डर तो लग नहीं रहा मेरे को हल्का सा भी। गलती कर दी मैंने। मेरे उम्मीद के हिसाब से काफी जल्दी खत्म हो गया है। मुझे लगता और थोड़ा सा ये रुकने वाला था मेरे हिसाब से, मैंने जो हिसाब करी थी। बट नहीं, ये सरवाइव नहीं कर पाया। इसकी एंट्री बस थी जबरदस्त, बट मरा काफी गलत तरीके से मान, अदरक के साथ। और कितने ऊपर हो सकता है भाई द वे ओडिन?
मैंने पानी अपने आप को चार्ज अप कर लिया मैन। कहाँ पर है? फ्यूल अप करिए बट उसके बावजूद अब तो ये कट सीन है। कम ऑन, लेट्स गो मैन, लेट्स गो मैन। फाइनली एक प्रॉपर कट सीन हमने देखे हैं, बट हम करीब पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यही है, ये संदेश दे रहा है कि इट्स टाइम बॉय। अबे नहीं, एक और मिनी बॉस मेन के आने से पहले। बड़ा वियर्ड सा मिनी बॉस है जो कि 2 हिस्से में खुलता है। लॉल, ओ इसका एनाजॉन भी है, फ्यूल जो भी कैपेसिटर है। हमें से लड़ना है ना। कम ऑन देन, लेट्स गो बेबी। मेरा भी यही कहना था, आने का है माम कचौड़ी। भरता बना दिया मेरा इसने। मिनी बॉस नहीं है, मेन बॉस की आई मीन ये एक तरह से दिमाग खराब वाला बॉस है। कोई नहीं, ले लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गलती कर दी मैंने, बहुत दूर है वो यार वो। गलती कर दी फिर। कम ऑन मेन। इसी फिनिशर की बात कर रहा था मैं, जो कि और बॉसेस में भी होने चाहिए था। मतलब मिनी बॉसेस की बात कर रहा हूँ। तुमने फाइनली बजा दिया, बट ये इनफ नहीं है बिकॉज के पास और गणपत लाल है और घटोट कच है जिनका हमने गेम बजाना है। कदे गलत हिसाब है, कोई बात नहीं। मैं कहना चाहूँ गलत हिसाब मतलब सफलता की ओर हम जा रहे हैं। बाप रे बाप, इससे हम लड़ चुके हैं भाई। तो हंट बोर्ड है, मैं लड़ा हूँ इस टाइप के क्रीचर से। It's not that bad actually. अबे यार दूर चला गया मैन ये।
फिर बच गया चौधरी। खेल खत्म और हम जाएं डिसमेंटल्ड। हाँ सही है। थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाई आई बट मजा आया मारने में। कितने बड़े बड़े चीजें लेके आया था यार। एक एक चीजों की आवाज सुन रहे हो, कड़का दे रही है एकदम। किसी कारण से बारिश हो रही है यहाँ पर। इतने सारे लोगों को सामना करके हम यहाँ पर फाइनली बॉस से लड़ने वाले। ये अगर एल्डन रिंग में होता ना, मतलब दिमाग का दही हो जाता। आई मीन सही में इतने सारे लोग फिर एक और बॉस, आई मीन उनमें तो फेज होते हैं, वो अलग बात है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने ये मिनी बॉस दे दिए फिर उसके 4 फेज कर दिए उस मेन बॉस के, फट के हाथ में आ जाएगी। नोट करने है। इवन दो एल्डन रिंग का लास्ट बॉस बहुत ज्यादा हार्ड था यार, मैं मजाक नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा हार्ड था वो। ऑलमोस्ट देयर यार। अब पता नहीं और मिनी बॉसेस ना आ जाए भाई। हाई पुश। He's here. I can feel him. इंतजार कर रहा होगा बैठ के। लॉल आ जाओ क्लाइव, तुम्हारे इंतजार थे। तुम्हें इधर का गेम बजाने। ओह माय गॉड, ये क्या है? किसकी मूर्ति है ये? 4 हाथ। अल्टीमा है तो अल्टीमा का रिप्रेजेंटेशन मूर्ति के द्वारा। अल्टीमा Why? The blade must ever feed if her edge is to remain keen. Butcher. What care you for these worthless creatures? They are nothing. Weak from the moment of their conception. Finally, it's time. यकीन नहीं हो रहा हम यहाँ पर लड़ने वाले हैं। To command. बर्नाबस से है ना, उसकी ताकत ओडीन वाली वो लेने वाले हम। They roam in filthy flocks, eager to trample those few gifted a fleece of gold. Or that they might feel contentment with their pitiful existence.
prejudice and persecution, severance and strife. Every earthly wrong springs from the malice in men's hearts. Malice born of the pain and suffering that is free will. Its corruption is gnawed at your being from the very moment of your birth. You're wrong. It is no corruption. It is who I am. Every choice I make, right or wrong, gives me reason to carry on. And carry on I shall. Not as a puppet, but as a man. Which are you? There was a time I too thought those the only choices. What? Long ago, God granted man the gift of magic. And with that gift did he build great civilizations. Yet over time, man lost sight of the gift's true meaning, stepping from the path of shared prosperity to one of avarice. He abandoned his creator for sword and flame, and through his folly, beckoned the Blight. Yet, there were those few who refused to turn their eyes from the heavens, and they prayed to God that he might lead them back to righteousness. And the Lord, he did answer. Before the worthy shall the gates of paradise open. And so did I spread my arms to the aether, and cast my soul upon its gentle waters. I gave myself unto him. पोयम बोलती बंदे ने यार, टोटल रेस्पेक्ट है, बट यहाँ पर हम क्या इस बैटल को शुरुआत कर सकते हैं? इस बैटल की शुरुआत ये एनीमे में होता है, डायलॉग बाजी थोड़ी सी स्टार्टिंग में, फिर पेल एंड पाल वॉटेवर जो भी टर्म हो सकता है, तो मैं टोटली रेस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ का, एंड दैट्स मैं पूरी तरह हाइप हूँ इसकी ताकतों के लिए। मेरा प्रॉफिट बहुत होती नहीं थी वो इसमें जो है इसके पास है तलवार में। My worth proven, the Lord charged me thus. If your kind are to find salvation, they must be made to serve. You see, paradise lies but a single step away. Could we only take it? Could we only leave our transgressions behind? For none save the pure of heart and mind may set foot in the new world. I will save us. But it all begins and ends with you. You are the key, Mythos. And with this humble offering, shall I prove my faith once more. So you forsook your kingdom. You forsook yourself to serve. Tell me, how is that living? What you seek to provide is not salvation. It's anything but. Life is about always having a choice. Take that away, and we might as well be dead. Very well. Come then. Show us the strength of your will. Let's go, baby. My will that should worry you. The moment has come, has arrived, whatever you can say. Weakness of yours. अब मजा आने वाला है यहाँ पर। अब लड़ाई होगी ना मैन। आ जाओ चौधरी पंथी। क्या करना है? गेम खत्म करना है। कैसे करना है? बैटल करके। आ जा। यकीन नहीं हो रहा बॉयज। गाता है काटा ला इसने मुझे आती। इसके पता नहीं कितने फेज होंगे मैन।
ये एक बैटल होगी मैन, नॉट गनल है भाई, काट डाल रहा है ये तो खतरनाक तरीके से। नचा रहा है भाई ये। इट्स ओवर 50,000 का डैमेज अचीवमेंट भी था यहाँ पर, मुझे नहीं पता था यार। बड़ी कुछ भी नहीं है, सही बताऊं कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बाप रे बाप, ये तो एकदम खतरनाक अनफेयर है मैन। लाइक मैं तो अपने टाइटन फॉर्म में आया भी नहीं हूं। कुचलने की कोशिश कर रहा है, ये चीटिंग है मैन। इसकी हाइट पता नहीं कितनी बड़ी है। मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं, बट मुझे लगता नहीं मैं उसके, क्योंकि उसके पास घोड़ा है फिर वो खुद है, दोनों की हाइट कितनी बढ़ा दे रही है, देख सकते हो आप। आई मीन अगर ऐसे उड़ता रहेगा तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। यहाँ पर फीनिक्स की दरकार है, उड़ने की दरकार भी है मेरे को। कर ले बात चाचा 4000। आई मीन ये डैमेज बहुत कम है मुझे पता है, बट घोड़े को हमने सत्यानाश कर दिया आई गेस। ये अपने पुराने फॉर्म में क्यों आ गया? कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये उसका ट्रैप था। हाँ नहीं, बंदा टैक्टिकल खेल रहा है सही में। Shown the path. Now you must follow it. Free yourself, Mythos. You will not defeat me otherwise. We'll see. Perhaps you still require persuasion. भाई 100 बंदा दे रहा है यार।
You admitted defeat the moment you turned your back on us. When you turned your back on the truth, Barnabas. We are not as weak as your God believes. मुझे लग ही रहा था ऐसे कैसे कुछ भी नहीं हुआ इसको यार, ऐसे कैसे आसानी से खत्म हो सकता है ये। चले मजा आना यार प्लीज, ये फाइट कंटिन्यू करनी हमने, बट ऐसा लगता है नाइस टॉगल। ओ नहीं ये गया नहीं है, अब मजा आएगा ना। मुझे लगा जा रहा है, रिट्रीट कर रहा है चौधरी चांडी मान, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ ये करे रिट्रीट। बड़े भगा रहा है मेरे को बट क्या मैं ओ गरीबी मामला, कितना कूल कट सीन है। बाप रे क्या तलवार है तलवार देख रहे हो साइज, ओ तेरी, इससे अगर बंदा नहीं मरेगा तो कौन मरेगा यार। गया मैं, फाइनल अटैक है इसका, खत्म है ऐसा लग रहा है। कम ऑन इफ्रीत, लड़ने का है। ओह तोड़ डाला मैंने, सही है ना। वो तलवार मैंने ले लिया आधा पार्ट। ओह क्या नहीं, उसी के तलवार से सीखो। Could it be you have made a weapon of your weakness? My apologies. उसके बाद बस हैंडल है अब। You are not the fool I took you for. And so it ends. No! Whoa, whoa, क्या? Don't tell me you are tired, Mythos. Your stubborn defiance has stirred my long becalmed heart, filling it with a joy that I have not known for generations. I had thought the tantalizing kiss of self-indulgence a dream forever out of reach. And now that its sweet ruin courses through my veins, I shall not be quick to relinquish it. Show me your work, Mythos, that I might revel in it! Oh my god, लड़ाई होने वाली है फिर। अबे यार गायब हो गया बंदा।
God damn you, क्या बैटल है, कुछ दिख नहीं रही चीजें यहाँ पर भाई साहब। Rejoice as our souls are granted peace unending. How do you know this day will come? What proof have you? Your mere existence is proof of the Lord's grand design. I'll never serve your God! ओह माय गॉड, क्या है ये? बैंड की चूड़ी सीमेंट है और कुछ नहीं है। हिला दिया बंदे ने। इसको लग नहीं रहा है कुछ यार। Many have sought my crown, Ethos, but none could wrest it from my head. मारू कैसे उसको मैं? Have you the strength? Have you the will? फाइनली वो अपनी एनर्जी खो रहा है। लेट्स गो बेबी। इसका खेल तो मैं ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। I am yours, Ethos. Claim me as your prize. पागल हो गया चौधरी वो। ये करे तो उसका हेल्थ एकदम नहीं था, फिर भी कितना मारना पड़ा। उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है ओडिन के पास स्ट्रेंथ। क्या ये अंत है? सबसे बड़ा प्रश्न।
It is I who stand victorious. My will that prevailed. Your will? No. It was his. Clive Rossfield. तो फाइनली हम कंसीडर कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं हम कंसीडर कर सकते हैं ओडीन खत्म हो गया, बिकॉज यार वो नीचे गिरा है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। लेवल 44, लेट्स गो। डार्क शार्ड, बट वो खत्म नहीं हुआ है, मैं इतना कह सकता हूँ टोटली विश्वास के साथ। देख सकते हो यार वो सांसें ले रहा है। काफी जल्दी मैं नीचे ही पहुंच गया। Perhaps there is strength in will. Would that I had not relinquished my own. You relinquished nothing. What was it, if not will, that made you strive for a new world? Strive to win your master's approval? You were shown a fantasy, and you chose to believe it. But you were wrong. There is no world but the one we live in. And that world is worth saving, even if it means killing a god. Bold words from one who has served the Lord so well. This is pointless. But I almost forgot. I promised that I would make you presentable. Did I not? Oh no, मतलब क्या है इसका? God damn, ये आखिरी सांस तक लेके जाएगा मेरे को, प्रेजेंटेबल बनाने वाला। अबे छोड़ चच्चा। Just as the Lord's Mothercrystals have fulfilled theirs. अबे दूर हट। Clive Rossfield, take what is rightfully yours. Become one with God. No. At long last, salvation. I'm coming home. Mother.
Tell me, how does it feel? Show yourself! Face me! How does it feel to consume your rival's strength, to gorge yourself on their beam, to edge step by trembling step ever closer to the divine? With or without a will, you are still but a vessel, our vessel. Behold, how your body shudders in anticipation of its fate. It's not yours yet. No. Come then, O wayward child. We shall await you upon the back of the first worm. There all shall end and begin again. यार ऐसा लग रहा है कि हम और ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं, लाइक शक्तिशाली। ये ओडिन वन ऑफ द खतरनाक आइकन था जो कि हमारे पास है अब। इससे ऊपर आई गेस अल्टीमा है जो कि लास्ट में हम लड़ेंगे उससे। उसकी ताकत कुछ, आई डोंट थिंक उसके पास कुछ भी ताकत है। आई मीन ताकत बोले तो जो कंज्यूम कर पाए हम। सो यहीं तक हमारा सीमित सफ़र है गैस। फाइनली इस शील्ड को हमने तोड़ डाला। मैन अजीब सा लगाया था, इतने सारे रॉड उसने। Finally, a vessel complete. Collect the final piece. Okay. Meanwhile, कूप का ये दालमेकियन रीजन है ना? या रिपब्लिक। अबे ये तो अंकल है। हालत खराब है। ज्यादा देर तक नहीं रोकने वाला है। अच्छा पानी पी रहा। Byron. Since when was Eikons want to hide when there was a fight to be had? Since they stripped me of my rank and banished me from the battlefield. Now I'm stuck wiping the backsides of this lot while the city burns and my wife tells off with a man half my age. And then you turn. खराब लगा, सॉरी। What indeed? The enemy numbers 200,000 or more, counting yours. There are simply not enough soldiers garrisoned in the capital to repel an army of that size. Then one of the central keep, held by a contingent of soldiers and bearers from the surrounding boroughs. They are the sole reason it still stands. And all it took was an army on their doorstep to bring them together. The prospect of death does put things into perspective. Perspective. Perhaps it's what we've lacked all along. Me some of your best men, preferably all of them. My best men? Does it look like I need more? I admit this might not be the most convenient time, but my nephew's in trouble, and I may have already promised him your help. Your nephew, the outlaw? Never! My soldiers have better things to do than die for nothing. Then you and he are of the same mind. I fight for the opposite.
He fights for a world in which we shouldn't have to live and die for nothing. And he fights today to give us all the chance of a better tomorrow. Be that as it may, a handful of men cannot stand against a kingdom. Then mayhap they are the wrong men. Beyond. Well, I'll be damned. Nice. Nice. Our numbers are few, but I shall rally as many of my dragoons as I'm able. You, apprise the Lord Strategist of the state of the city's defenses. Yes, Your Radiance. And you would fight alongside us? I owe the Phoenix a debt. Does this vouch for my nephews? Aye, but I still have my doubts about you. Which we can discuss later. Indeed. You said you had men garrisoned in the keep. Captain, do you know how many yet remain? Allow me to confirm. Commander? Whatever their number, Randalar will be Gather needing the them bodies all. and build a pyre in the courtyard. Quickly. Terence. My lord. You will find a girl there. A girl? We are in the middle of a war. I owe her my life, and I always pay my debts. You are to see that she is provided for. मुझे पता है किसकी बात कर रहा है. Cannot leave. Medicine girl. You shall. If I'm ever to be worthy of the forgiveness of our people, then I must earn it. And I must earn it by my hand, and my hand alone. Know that I do not ask this lightly. And know that I will do it. Farewell, Terence. Farewell, my prince. Clive. Thank fuck. You alright? I am. But I'm a damn sight better for seeing you, Joshua. And Barnabas. The king is dead. So they're all... They are, but so is their killer. He can't hurt anyone anymore. You're safe.
Gav. We need to talk. I'm sorry, Clive. You know I want nothing more than to go with you. I do. But I'm glad you're heading back to the Enterprise nonetheless. And not just for Edda's sake. Our people need to know what happened here. You can count on me. As can she. नाइस, ये लोग हाइडे पे लेके जा रहे हैं एडा को. यही तो दरकार थी. Thank you, my lords. नाइस. सो अंदर या रॉप और अब चे. वैसे मैं भी हाइड अवे जाने वाला हूँ. Do you think that was wise? Wiser than leaving a woman with child alone in the Deadlands. They'll be safer at the hideaway. For now, at least. This land is overrun with Akashic. The king himself was long turned, albeit by choice, all to serve Ultima in his damnable quest to forge the perfect vessel. The chaos Barnabas wreaked upon nation after nation. How many were killed for this? He didn't consider it killing, or a mercy of sorts. A way to end their suffering. He truly wanted to save mankind, and ultimately use that. As he uses us. But why us? What are we? What are we? We are dominants. That is our fate. But that doesn't mean we have to accept it, which is why we fight. For the right to deny it. Is that not so? It is. For our sins. Barnabas said something else. That the Mothercrystals were Ultimas. Ultimas? Are you certain? We know that the Mothercrystals have been leading the land of Aether. And we also know that it's this which hastens the spread of the Blight. But what I cannot fathom is what Ultima stands to gain from that. What did you find at the stronghold? The truth about Ultima's prize. For so long, I believed it to be you, and you alone. Yet, it is not merely a freed that he desires, but a freed and phoenix both. That which we became in the skies over Twinside. Only when the twin flames are joined shall his vessel be complete. Quite why he needs a vessel is another question. Unless there is something he cannot achieve without one. Something his immaterial form precludes. Something requiring an unthinkable amount of ether and a body resilient enough to channel it. If I did not know better, brother, I would think that he meant to cast a spell. A spell 1,000 years in the making. A spell to end all spells. And he cannot do it without us. Nor without the Mothercrystals. But if we destroy them all, we will stop not only the Blight, but Ultima as well. We stick to the plan then. Only this time, we face him together. Well,
It's a long walk to Stone here. Let's not keep Ultima waiting. Brotherhood. Nice. क्लाइव हैज क्लेम्ड। अच्छा ये तो डेफिनेटली हम करेंगे इसको। ओडीन तो मतलब चाचा नेहरू है मैन, खत्म कर देंगे सबको हम। When Barnabas fell, his magic died with him. The road to Stone here is barred to us no longer.